आपका था कि मैं 4 फिल्में करता हूँ, 2 OTT पे मतलब और 17 ऐड करता हूँ। कुछ मिसिंग था उसमें जो हमेशा हेडलाइन बनता है, अक्षय सर 100 करोड़ चार्ज करते हैं, 50 करते हैं। ऐसी खबरें देख के क्या रिएक्शन रहता है आपका? सीरियसली बड़ा बढ़िया रिएक्शन। तेरा क्या रिएक्शन? तेरे बता बता, तूने बता, तेरी शेरवानी में परेशानी हुई कोई? अच्छा लगता है कि सर अच्छा लगना चाहिए ना, अच्छी बात है बेटा, पॉजिटिव बातें हैं, अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ भगवान करे तेरे साथ भी हो, हैं? बढ़िया। Akshay sir over here, straight. Himesh this side. अगर आप जब देखोगे ना ये फिल्म को, सो आपको लगेगा कि वाकई में इट शुड बी डेडिकेटेड, एंड वाकई में ये कहना चाहूँगा कि बिकॉज ऑफ द फैंस वी आर अलाइव। नहीं तो हमारी औकात नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं है, मतलब हम जिंदा भी नहीं रह सकते। दिस होल फिल्म, I want to announce it, this whole film is dedicated to all the fans of all the celebrities in the world. अक्षय सर ये कमाल का डायलॉग सर। Emraan, the trailer looks quite amazing, you know. It has masala, drama and revenge. What did you enjoy the most with Akshay? Revenge? Yeah, I felt very bad mouthing those lines because I adore him. I've followed him as a fan through his career, and I have got the privilege of getting to know him in the past 3-4 years. सब लोग जानते हैं कि he's been around for me when there was this issue with my son, health issue. He was the first one to call me and stand by me and stand by our family. And I didn't know him very well back then. So, you know. It's been a great experience working with this man here. Wonderful man, wonderful actor. And the first time I worked with him. Very surprised. No. Why look so surprised? No, because I thought he was Like, pointing at me man. first. And he just skipped to me and went straight on. Emraan, wonderful man. You are a wonderful man, Emraan. You know that. you so I've much, said it to Karan. you on a number of occasions. So when I told Akshay that I can't drive, he was very surprised because I really can't and I shouldn't. You have a license or not? I You don't have it or not? we'll talk about this later. Okay. सर, फैन लोग तो आपके साथ काफ़ी सेल्फी निकालते हैं। आपने अपनी लाइफ की बेस्ट सेल्फी किसके साथ निकाली है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में? खैर ये जो सेल्फी का जो चीज़ें हैं ये तो अभी शुरू हुई हैं, मुझे लगता है। कितने जब फ़ोन मोबाइल्स आए थे पहले तो फोटोग्राफी होती थी, फ़ोटोग्राफ लेना। और मुझे अभी तक याद है फ़ोटोग्राफ के ज़माने में मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ सुन तो लो, हाँ, अमिताभ बच्चन जी के साथ फ़ोटो खिंचवाई थी जब वो हमें बेमिसाल की शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में। तो वहाँ जाके उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाई थी और वो अंगूर खा रहे थे, उनके अंगूर मैंने चुरा भी लिए थे। नहीं, सेल्फी की बात करें अक्षय जी। फोटोग्राफ कर लिए तो उस वक्त फोटोग्राफी होती थी। अभी ये तो अभी शुरू हुआ, मैंने किसी के साथ सेल्फी नहीं करवाई। ओके, मैंने खींची है लेकिन किसी को जाके बोला नहीं है। ठीक है जी। हेलो अक्षय सर, आपसे सवाल है। एक वक्त हुआ करता था आप लोग ऑटोग्राफ दे देते थे, बहुत आसान होता था। अब हर किसी को सेल्फी देना कितना मुश्किल लगता है। ऐसे में महाराज सेल्फी लेना आसान है, ऑटोग्राफ में 5-6 शब्द को काफ़ी वक्त चला जाता है, लेकिन सेल्फी लेना ज़्यादा बेहतर है। और फैंस को भी अच्छा लगता है सेल्फी लेना, लोगों को अच्छा लगता। पहले तो मुझे भी याद है कि हम खुद के फ़ोटोग्राफ लेके उस पर साइन करके भेजा भी करते थे लोगों के, मतलब किसी कोई अगर मांगता था तो वो अपनी खुद की फ़ोटो देते थे, अपने किए हुए साइन किए हुए फ़ोटोज़। मुझे बल्कि हाल ही में कोई मिला था। अरे क्या हो गया? अच्छा, जिसने मुझे अपनी फ़ोटो भी दिखाई थी जो मैंने दी थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Hi, Akshay sir. Hi, sir. Hi. Yes, Hi. ma'am. Hi, I'm from News 18. I have actually 2 questions for you, Akshay sir. We often tend to forget to humanize superstars. What do you think is the biggest misconception that people have about a superstar? देखिए, मुझे हो गए 32 साल इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं अभी भी दिल्ली का रहने वाला हूँ, चांदनी चौक का। वहीं मुझे जहाँ आप बात करते हो ह्यूमन की, हम वैसे ही हैं, आपके जैसे ही हैं, फैंस के जैसे ही हैं, उनके जैसे ही खाना पीना, वही दाल चावल रोटी खाता हूँ मैं। रात को जल्दी सो जाता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ। सो देयर इज़ नथिंग लाइक
अगर आप ये देखें कि एक सुपरस्टार कुछ बहुत ऊपर है तो मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं अपने आप को हमेशा नीचे ही रखा है और मैं ज़्यादा बेहतर ही रहता है। आज भी मैं आपको बताऊँ, मैं गद्दे पे नीचे सोता हूँ क्योंकि आदत है सोने की, वैसे तो उसी हिसाब से रहता हूँ ज़िंदगी में। Ji, sir. Raj? Also, Akshay sir, you look absolutely dapper. Thank you very much, You ma'am. have forayed into fashion. Tell us a little bit about that. What made you want to launch a line? That we shall talk later, ma'am. Okay. राज, मेरा सवाल आपसे है, आपसे भी है और इमरान जी से भी है। जो ये फिल्म है इसमें नेचुरली जो हीरो हैं वो अक्षय हैं, लेकिन जो फिल्म का जो थीम है कि एक आम आदमी जब अपने में आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो इसका स्क्रिप्ट के लेवल पे क्या हीरो दोनों ही है या सिर्फ अक्षय जी रहेंगे? मैम दोनों ही हैं। मैं बस फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता, बट इतना ही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म का, हालांकि ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं किसी वजह से, बट ये दोनों अच्छे लोग हैं। एंड जो फ़ैन भी है बेशक वो उनसे भिड़ता है लेकिन उनके दिल में हमेशा वो रहता है, तो इससे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। बट दे आर बोथ वेरी गुड पीपल, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ सर्कमस्टांसेस और कन्फ्यूजन्स की वजह से कुछ उनके बीच में थोड़ी सी तकरार हो जाती है। बट आप फिल्म देखें आप तो पता लगेगा कि इसमें कोई विलेन या हीरो नहीं है, देर ऑल नाइस पीपल। और 2 हीरो नहीं है, हम 4 हैं। अक्षय सर, योर सेंटर। अक्षय सर, योर लेफ्ट। राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल इमरान और अक्षय सर आप दोनों से है, कॉमन क्वेश्चन है। आपके लाइफ में सेल्फी का कितना बड़ा रोल रहा है? कोई ऐसा अनएक्सेप्टेबल मोमेंट आप दोनों के लाइफ का कुछ शेयर करना चाहेंगे? सेल्फी का अनएक्सेप्टेबल मोमेंट? जी नहीं, ऐसा कोई मोमेंट नहीं रहा है। आई थिंक जैसे अक्षय ने कहा कि आजकल वो जो एक लैंग्वेज बदल चुकी है, जो ऑटोग्राफ हुआ करता था 15 साल पहले, वो अभी सेल्फी में बदल चुका है। आई थिंक फैंस की एक्साइटमेंट, उनका प्यार, वो अभी एक तरह से आइडेंटिटी भी हो गया ना, कि वो सब सोशल मीडिया पे है। वो एक तरह से वैलिडेशन भी चाहते हैं अपने स्टार्स के, जब मिलते हैं तो उनको एक सेल्फी चाहिए। वो एक्साइटमेंट कभी कभार यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज एन एक्टर, आई थिंक। लेकिन जो सबसे ट्रिकी, अगर आप बोल रहे हो कि एक ऐसा लम्हा जो शायद बहुत ट्रिकी हो गया था, आई थिंक सबसे ट्रिकी फ़ैन वो है जिसको पता नहीं होता है कि उसके कैमरे का ऐप कहाँ है फ़ोन में। जब आप गॉड फॉरबिड कहीं फ्लाइट या कुछ पकड़ रहे हैं और उनको पता नहीं है कि कैमरे का ऐप कहाँ है, और जब वो ढूंढ रहा है ऐप फ़ोन पे, तो वो बड़ा ट्रिकी हो जाता है जल्दी में। वो टाइमर वाले भी होते हैं, वो टाइमर वाले। वही फैन जब सेल्फी लेता है तो उसको अपने एंगल से प्रॉब्लम होता है, फिर आपको वहाँ पे और 1 मिनट बिताना पड़ता है, फिर उसके बाद जब वो खींचता है तो ब्लर आता है स्नैप, तब तक आपकी फ्लाइट निकल गई होती है। अक्षय सर, उसके ऊपर एक और कहानी भी आती है, और साथ में कभी कभी वो ये भी कह जाता है, ये मेरे लिए नहीं है, मेरा बच्चा आपका बहुत बड़ा फैन है, तो ये मैं उसके लिए खिंचवा रहा हूँ। वो कमाल की एक लाइन होती है, वो बहुत बढ़िया लाइन होती है, और उसकी आंखों में देख रहे होते हैं, भैया तू हमसे फोटो खिंचवाना चाहता है, बोल देना यार, क्या प्यार ही तो करना है तूने हमसे आके, ये दिखाने की क्या जरूरत है कि मैं अपने बच्चों के लिए खिंचवा रहा हूँ या माँ बाप के लिए खिंचवा रहा हूँ। लेकिन बढ़िया रहता है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो फिल्म हमने बनाई है, मैंने जब पृथ्वी का फ़ोन आया था, मैंने जब ये फिल्म देखी, यार ये फिल्म है ना, इट इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द फैंस ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड। दिस इज़, अगर आप जब देखोगे ना ये फिल्म को, सो आपको लगेगा कि वाकई में इट शुड बी डेडिकेटेड, एंड वाकई में ये कहना चाहूँगा कि बिकॉज ऑफ द फैंस वी आर अलाइव। नहीं तो हमारी औकात नहीं है, हमारी कुछ भी नहीं है, मतलब हम जिंदा भी नहीं रह सकते। दिस होल फिल्म, I want to announce it, this whole film is dedicated to all the fans of all the celebrities in the world. अक्षय सर, ये कमाल का डायलॉग्स आपका था कि मैं 4 फिल्में करता हूँ, 2 OTT पे, मतलब और 17 ऐड करता हूँ। कुछ मिसिंग था उसमें जो हमेशा हेडलाइन बनता है, अक्षय सर 100 करोड़ चार्ज करते हैं, 50 करते हैं। ऐसी खबरें देख के क्या रिएक्शन रहता है आपका? सीरियसली बड़ा बढ़िया रिएक्शन। तेरा क्या रिएक्शन? तेरे बता तूने बता, तेरी शेरवानी में परेशानी हुई कोई? अच्छा लगता है कि सर, अच्छा लगना चाहिए ना, अच्छी बात है बेटा, पॉजिटिव बातें हैं, अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ भगवान करे तेरे साथ भी हो, हैं? बढ़िया। Akshay sir over here, straight. Himesh this side. Hi. Prithviraj Productions, and we couldn't think of a better star cast, and to collaborate with Akshay sir himself on our first Hindi film, it doesn't get bigger than this. And why I wanted to speak to you about this is because you are able hands, because the hands are never able unless there's a mothership hand. And that's why the very last force I'd like to call on stage is one of our closest collaborators. He's one of my dearest friends. And he's just speaking to Supriya ma'am about, her energy and instinct about,
handing her film, her baby to us into able hands, as I said, but this is the mothership hand to actually hand it to. And long-standing relationship with Madhavan sir we all have, so it feels like a family endeavor right now. What do you think, Bikram? No, absolutely, Karan. What can I say? So many fabulous, successful films we made with Dharma Productions, with you, with Akshay Paji. It just feels like this is, I hope, that what we are feeling about this film being that drama that we feel is successful, and audiences will feel the same. Yes. It seems like it's a continuation of that journey with so many of the partners we have worked with. And first time working with Raj Mehta, who's had an illustrious 2 films that you spoke. Yes. A great relationship with Prithviraj, with Star Studios. So I hope this continues and everybody loves it. So it really feels like it's organically come together. Organically come together, Yes. like everybody coming together, more like family than Yes, anything else. that's why. Prithvi, not only have you been the mega star portraying the part that Akshay will be portraying in the Hindi adaptation. I say adaptation with a lot of stress because this is completely Raj Mehta's version of Selfiee. How did that feel? And when you've seen the trailer, the rushes, what did that feel when you saw our depiction of the film? So, I mean, as someone who's been very closely associated with developing the original material, I kind of know from where it began and how it took the form of driving license and where it is today with Selfiee. Full credit to Raj for having seen the original and then thought this film is possible from that source material. Yes. That requires a lot of talent. And to be able to tell a story in a different fashion, but still retain the core elements of it, still make you feel what the original made you feel. Right. Maybe even in an enhanced fashion. The person who wrote the original, Sachi, is no longer with us today, was one of my closest friends in the industry. I'm sure if Sachi saw Selfiee, he would be very proud. So thank you, Raj, for doing that firstly. And one person that I have to absolutely pick out and thank is Akshay sir. Because he is the person with which this journey actually began. I called him, I knew Akshay sir from long back, so I called him one day and I said, sir, there's this film of mine that I'd like you to watch because I believe it's a story that needs to be told everywhere in the country. He said, okay, I'll see the film and when can I call you? And I said, sir, call me anytime. It's very dangerous to say anytime to Akshay sir because, Yes. because that anytime can start from 4 a.m. Yeah, so I was on the treadmill or something the next day. I was working out when I got a call and he said, hey, Prithvi, this is Akshay. I want to do it. And I have to tell you, sir, the breathlessness was not just the excitement. It was also the workout. So, yeah, I mean, it was Akshay sir's that decision that set the ball rolling. And Karan and Dharma handheld us all through the process. We can't claim to have done a lot on this film except stand by Raj's and Karan's vision and to believe in Akshay sir, Emraan, Nusrat, Diana and the whole team. And we are very, very proud that we are here today representing 2 production houses from Kerala, Prithviraj Productions and Magic Frames. For us, this day and this moment is way bigger than just the launch of a new film. We hope to be able to associate with pan-Indian content in the future. And thank you, Karan, and thank you to everyone on stage. So exciting. Like when you say pan-India, the coming together is happening as we speak. Prithvi is here on this platform as producer with us, standing tall, while he shoots with Akshay for Bade Miyan Chote Miyan. It doesn't get bigger, better, and more pan-India than that. I think that deserves a huge round of applause. Thank you. Just the coming together of forces. Sir, I hope you think our frames are as magical as your company resonates. If he is to speak, I'll have to do an English translation. No, but I think his excitement in his eyes is a language of its own. Absolutely, and I think we see that, we respect that, and we are very humbled and privileged to have you on board Stephen with us. is a landmark producer in Malayalam cinema because he produced one of the most important films in the new wave of Malayalam cinema called Traffic when he was 22. Oh, so, wow. Yeah, so he is quite the inspiration for all of us young producers in the industry. Well, I look forward to collaborating with you on many more films and content.
Thank you, sir. Thank you for being here. Anshul, this is a strong alliance. We're happy that we're coming together. We're so happy that your very first mainstream film and already your music label has had such thunderous success, has really been not only a clutter breaker, but has been such a strong success story. How does it feel today? Akshay has such tremendous faith in not only your prowess as a musical force, but also your ability to suss out the right sound and music of today that hits every chart. So for the very first time when I met Akshay sir, he was shooting for Ram Setu, and I remember that meeting. I went there, I met him. It was a 20-minute meeting. We met for 20 minutes, and he told me, in next 20 days I'm going to call you, and we're going to do a film together. वहाँ से मैं जैसे ही बाहर निकला मुझे पता चला सर को कोविड हो गया है उस दिन, और सर का तब भी 20 दिन के अंदर ही फोन आ गया था. COVID. One thing that we've learned from this interaction, that whenever Akshay says he'll call back or he does stick to that. And so Akshay, that's a rare quality, because people, and I remember before I show you the trailer, I have to say, Prithvi spoke about an early morning interaction. My very first professional meeting with Akshay, I actually missed, because he called me and he said, please come at 6. At 8 a.m. I woke up to a couple of missed calls and he said, "तू नहीं आया?" तो I said, "मैं आ रहा हूँ ना 6 बजे." He said, "मैंने 6 a.m. कहा था." So I was like, I never in my life thought. But then Akshay said, "Morning है तो 6 बजे है तो day शुरू हो जाना चाहिए." I was like, of course, having worked with actors who were never ever out and about at that time, it was always refreshing. But I never managed a 6 a.m. meeting, but I know Raj has had several 6 a.m. meetings. Once I was I landed in Bombay. I messaged sir, "Good morning, that I'm here." And in 5 minutes he messages me, and then he called me. He's like, "अच्छा 6-5 हो रहे हैं, तू 7-10 पे आ जा." तो तू सोया नहीं? अच्छा ठीक है, फिर मिलते, शाम को मिलते फिर. Note to remember about meetings with Akshay Kumar. Ladies and gentlemen, this is our illustrious gang here, forces behind this fantastic product called Selfiee. We can say that with assurance, and you will too when you see our theatrical trailer. And here it is. Thank you, ladies and gentlemen. We'll meet you right after. Thank you. That are related to the film. Thank you very much. And please ask, if the mic is coming towards you, just say who you are directing the question towards. Thank you. Hanji. बिना माइक के बोल लो. हेलो, कंपनी का मोबाइल है अक्षय जी. अक्षय नरेंद्र गुप्ता. नरेंद्र जी, क्या हाल है आपका? ऑल गुड अक्षय सर. बोलिए. सर, फैन लोग तो आपके साथ काफ़ी सेल्फी निकालते हैं. आपने अपनी लाइफ की बेस्ट सेल्फी किसके साथ निकाली है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में? खैर, ये जो सेल्फी का जो चीज़ें हैं, ये तो अभी शुरू हुई हैं. मुझे लगता है कितने जब फ़ोन मोबाइल्स आए थे, पहले तो फ़ोटोग्राफी होती थी, फ़ोटोग्राफ लेना. और मुझे अभी तक याद है, फ़ोटोग्राफ के ज़माने में मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ सुन तो लो. हाँ, अमिताभ बच्चन जी के साथ फ़ोटो खिंचवाई थी जब वो हमें बेमिसाल की शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में. तो वहाँ जाके उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाई थी, और वो अंगूर खा रहे थे, उनके अंगूर मैंने चुरा भी लिए थे. सेल्फी की बात करें अक्षय जी, फोटोग्राफ कर लिए तो उस वक्त फोटोग्राफी होती थी. अभी ये तो अभी शुरू हुआ. मैंने किसी के साथ सेल्फी नहीं करवाई. मैंने खींची है, लेकिन किसी को जाके बोला नहीं है. ठीक है जी. हेलो अक्षय सर, आपसे सवाल है. एक वक्त हुआ करता था आप लोग ऑटोग्राफ दे देते थे, बहुत आसान होता था. अब हर किसी को सेल्फी देना कितना मुश्किल लगता है. ऐसे में महाराज, सेल्फी लेना आसान है. ऑटोग्राफ में 5-6 शब्द को काफ़ी वक्त चला जाता है, लेकिन सेल्फी लेना ज़्यादा बेहतर है. और फैंस को भी अच्छा लगता है सेल्फी लेना. लोगों को अच्छा लगता. पहले तो मुझे भी याद है कि हम खुद के फ़ोटोग्राफ लेके उस पर साइन करके भेजा भी करते थे लोगों के. मतलब किसी कोई अगर मांगता था तो वो अपनी खुद की फ़ोटो देते थे, अपने किए हुए साइन किए हुए फ़ोटोज़. मुझे बल्कि हाल ही में कोई मिला था. अरे क्या हो गया? अच्छा, जिसने मुझे अपनी फ़ोटो भी दिखाई थी जो मैंने दी थी. हाँ,
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Hi, Akshay sir. Hi, sir. Hi. Yes, Hi. ma'am. Hi, I'm from News 18. I have actually two questions for you, Akshay sir. We often tend to forget to humanize superstars. What do you think is the biggest misconception that people have about a superstar? ये देखिए, मैं मुझे हो गए 32 साल इस इंडस्ट्री के अंदर. मैं अभी भी दिल्ली का रहने वाला हूँ, चांदनी चौक का. वहीं मुझे जहाँ आप बात करते हो ह्यूमन की, हम वैसे ही हैं, आपके जैसे ही हैं, फैंस के जैसे ही हैं, उनके जैसे ही खाना पीना, वही दाल चावल रोटी खाता हूँ मैं. रात को जल्दी सो जाता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ. सो देयर इज़ नथिंग लाइक, अगर आप ये देखें कि एक सुपरस्टार कुछ बहुत ऊपर है, तो मैं उनमें से नहीं हूँ. मैं अपने आप को हमेशा नीचे ही रखा है, और मैं ज़्यादा बेहतर ही रहता है. आज भी मैं आपको बताऊँ, मैं गद्दे पे नीचे सोता हूँ, क्योंकि आदत है सोने की. वैसे तो उसी हिसाब से रहता हूँ ज़िंदगी में. Ji, sir. Raj? Also, Akshay sir, you look absolutely dapper. Thank you very much. You have forayed into fashion. Tell us a little bit about that. What made you want to launch a line? That we shall talk later, ma'am. Okay. राज, मेरा सवाल आपसे है, आपसे भी है और इमरान जी से भी है. जो ये फिल्म है, इसमें नेचुरली जो हीरो हैं वो अक्षय हैं, लेकिन जो फिल्म का जो थीम है कि एक आम आदमी जब अपने में आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो इसका स्क्रिप्ट के लेवल पे क्या हीरो दोनों ही है या सिर्फ अक्षय जी रहेंगे? मैम, दोनों ही हैं. मैं बस फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता, बट इतना ही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म का, हालांकि ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं किसी वजह से, बट ये दोनों अच्छे लोग हैं. एंड जो फ़ैन भी है, बेशक वो उनसे भिड़ता है, लेकिन उनके दिल में हमेशा वो रहता है. तो इससे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बट दे आर बोथ वेरी गुड पीपल. जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ सर्कमस्टांसेस और कन्फ्यूजन्स की वजह से कुछ उनके बीच में थोड़ी सी तकरार हो जाती है. बट आप फिल्म देखेंगे, आप तो पता लगेगा कि इसमें कोई विलेन या हीरो नहीं है. दे आर ऑल नाइस पीपल. और 2 हीरो नहीं है, हम 4 हैं. अक्षय सर, योर सेंटर. अक्षय सर, योर लेफ्ट. राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल इमरान और अक्षय सर आप दोनों से है, कॉमन क्वेश्चन है. आपके लाइफ में सेल्फी का कितना बड़ा रोल रहा है? कोई ऐसा अनएक्सेप्टेबल मोमेंट आप दोनों के लाइफ का कुछ शेयर करना चाहेंगे? सेल्फी का अनएक्सेप्टेबल मोमेंट? जी नहीं, ऐसा कोई मोमेंट नहीं रहा है. आई थिंक जैसे अक्षय ने कहा कि आजकल वो जो एक लैंग्वेज बदल चुकी है, जो ऑटोग्राफ हुआ करता था 15 साल पहले, वो अभी सेल्फी में बदल चुका है. आई थिंक फैंस की एक्साइटमेंट, उनका प्यार, वो अभी एक तरह से आइडेंटिटी भी हो गया ना, कि वो सब सोशल मीडिया पे है. वो एक तरह से वैलिडेशन भी चाहते हैं अपने स्टार्स के. जब मिलते हैं तो उनको एक सेल्फी चाहिए. वो एक्साइटमेंट कभी कभार, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज एन एक्टर. आई थिंक, लेकिन जो सबसे ट्रिकी, अगर आप बोल रहे हो कि एक ऐसा लम्हा जो शायद बहुत ट्रिकी हो गया था, आई थिंक सबसे ट्रिकी फ़ैन वो है जिसको पता नहीं होता है कि उसके कैमरे का ऐप कहाँ है फ़ोन में. जब आप गॉड फॉरबिड कहीं फ्लाइट या कुछ पकड़ रहे हैं और उनको पता नहीं है कि कैमरे का ऐप कहाँ है, और जब वो ढूंढ रहा है ऐप फ़ोन पे, तो वो बड़ा ट्रिकी हो जाता है. जल्दी में वो टाइमर वाले भी होते हैं. वो टाइमर वाले, वही फैन जब सेल्फी लेता है तो उसको अपने एंगल से प्रॉब्लम होता है. फिर आपको वहाँ पे और 1 मिनट बिताना पड़ता है. फिर उसके बाद जब वो खींचता है तो ब्लर आता है स्नैप. तब तक आपकी फ्लाइट निकल गई होती है. अक्षय सर, उसके ऊपर एक और कहानी भी आती है, और साथ में कभी कभी वो ये भी कह जाता है, ये मेरे लिए नहीं है, मेरा बच्चा आपका बहुत बड़ा फैन है, तो ये मैं उसके लिए खिंचवा रहा हूँ. वो कमाल की एक लाइन होती है, वो बहुत बढ़िया लाइन होती है. और उसकी आंखों में देख रहे होते हैं, भैया तू हमसे फोटो खिंचवाना चाहता है, बोल देना यार, क्या प्यार ही तो करना है तूने हमसे आके. ये दिखाने की क्या जरूरत है कि मैं अपने बच्चों के लिए खिंचवा रहा हूँ या माँ बाप के लिए खिंचवा रहा हूँ. लेकिन बढ़िया रहता है. वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो फिल्म हमने बनाई है, मैंने जब पृथ्वी का फ़ोन आया था, मैंने जब ये फिल्म देखी, यार ये फिल्म है ना, इट इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द फैंस ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड. दिस इज़, अगर आप जब देखोगे ना ये फिल्म को, सो आपको लगेगा कि वाकई में इट शुड बी डेडिकेटेड. एंड वाकई में ये कहना चाहूँगा कि बिकॉज ऑफ द फैंस वी आर अलाइव. नहीं तो हमारी औकात नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं है, मतलब हम जिंदा भी नहीं रह सकते. दिस होल फिल्म, I want to announce it, this whole film is dedicated to all the fans of all the celebrities in the world. अक्षय सर, ये कमाल का डायलॉग्स आपका था कि मैं 4 फिल्में करता हूँ, 2 OTT पे, मतलब और 17 ऐड करता हूँ. कुछ मिसिंग था उसमें जो हमेशा हेडलाइन बनता है, अक्षय सर 100 करोड़ चार्ज करते हैं, 50 करते हैं. ऐसी खबरें देख के क्या रिएक्शन रहता है आपका? सीरियसली? बड़ा बढ़िया रिएक्शन. तेरा क्या रिएक्शन? तेरे बता बता, तूने बता, तेरी शेरवानी में परेशानी हुई कोई? अच्छा लगता है कि सर
अच्छा लगना चाहिए ना, अच्छी बात है बेटा, पॉजिटिव बातें हैं, अच्छा लगता है. मैं तो कहता हूँ भगवान करे तेरे साथ भी हो, हैं? बढ़िया. Akshay sir over here, straight. Himesh this side. Hi. Akshay sir, I have a question for you and Prithviraj. First question is, since, like you said, you have been here for 32 years, and since the start of your career, be it from Mohra till Selfie and Bademia, you have done a lot of two-hero films and multi-starers. How, like, what keeps you going in this genre, and do you think this is the way forward for films over here? It is. It is actually the way forward. We should be doing two heroes, three heroes. पहले होता था, अभी थोड़ा कम हो गया है. But I'm so glad I say Emraan did it. Now I'm doing with Prithvi, Emraan. Prithvi, me, and Tiger, and I'm doing about 2-3 of them. But that is more the merrier. It is good. People also want to see their stars and all the stars coming together. And I hope I say in this industry ये trend आना चाहिए कि 2-2, 3-3 hero करो यार, 4 hero करो, multi-starrer करो. I come from that time when I used to watch मनमोहन देसाई's film. कितने सारे मतलब ये सब बनते थे जितनी हमने फिल्में देखी हैं. करण के डैड ने कितनी सारी ऐसी फिल्में बनाई हैं. So मैं कहूँगा कि multi-starrer should be back and people should come together and do films. That's it. And Prithvi sir, you are also returning. You know, you are doing multiple films in Hindi right now. You are producing Selfie. You are doing Bade Miyan Choti Miyan. You are doing one more film with Karan as well. So how do you view this aspect? You know, returning over here after a break. You know, it's an interesting question that I get to feel a lot in the South too. I just think it's a natural progression of how cinema is evolving as we go ahead. And I need to tell you something. It's a small anecdote. I don't know. It must be 2013, 12. When Karan was doing a film in an anthology, I forget the name, Bombay Talkies, yes, yeah. So Karan had actually spoken to me back then and asked me if I would be interested in doing something in Bombay Talkies. At that particular point in time, I couldn't do it because I was stuck with some other commitments down south. So when I came to Bombay after that, I thought I'll go meet Karan, one of the biggest filmmakers in the country, and tell him, this is why I couldn't do it, I'd love to work with you. So I went to Dharma's office and we had this lovely conversation. 2013, around that time, Karan had predicted this then. I don't know if he remembers. He had told me back then, about 10 years ago, that very soon there will be a time when South cinema, North cinema, we all start collaborating and it all becomes like this one big industry where actors from the South will do content up North, content from the North will travel down South, and we'll slowly amalgamate into this one big industry. I'm not claiming we are there yet, but I think this is slowly and surely steps being taken towards that direction. And very soon, in a future that is not too distant, we will hopefully be talking about the Indian film industry, which then will become a force with which we can truly take on the world. So let's hope we are all part of that journey. Yeah. Prithvi, your debut. Well, I'm all for it. I've always believed, firstly, in good content. And everything should serve that good content. And it doesn't really matter if it's a solo hero film or if it's a 2-hero or 3-hero. I don't really know why there aren't too many 2 heroes, dual heroes, or multi-stars being made. They are being made, but there should be more films made in that light because they are successful. If you see the trend in the past 2 years, they've been very successful, and even from the dawn of cinema. So I always serve the script. It could be a multi-starrer, it could be a solo, it could be a dual. So it doesn't really matter for me. Prithvi, you're beginning with Dharma, collaborating as a producer. Yes, Many more in the pipeline. And how was it collaborating with Dharma? What would you like to say about the collaboration? Ma'am, we had the easiest journey as debut producers for Selfie because for one, Karan took all the decisions, but before every decision was being made or taken, Karan would call me and Apurva from Dharma would speak to Supriya and Liston, and we would have this discussion. This is how Akshay sir is seeing it. This is what Raj wants to do. Do you think this is a good way to tangent off from the original material? And so we felt like we were part of the creative process, we were part of the making, we were part of the execution, and we are so proud that this was such a smooth sailing process like Akshay sir said. And if anything, the whole experience of having produced Selfie makes us want to do many, many more films in Hindi. Because I don't know what the impression is out there, but from our experience of having worked with Dharma and Star Studios,
it is one of the easiest things we have done as producers in our journey that has been about 10 years long. I'm really looking forward to creating more content. I'm not going to say Hindi content. I'm just going to say I'm really looking forward to creating more content for cinema. It could be something that I do in Malayalam or Tamil or Telugu and bring here. It could be something that I set out to do, the film that Akshay sir, Tiger and me are doing. We are just not looking at it as a Hindi film. We want it to have a proper, presence everywhere in the country. And that is a way forward. That is a way forward to dream big, to have bigger ambitions. And I'm so excited about what is in store for all of us. Imran, Hi, Prithviraj. the trailer looks quite amazing, It has masala, drama and revenge. What did you enjoy the most with Akshay? Revenge? Yeah, I felt very bad mouthing those lines because I adore him. I've followed him as a fan through his career, and I've got the privilege of getting to know him in the past 3-4 years. सब लोग जानते हैं कि he's been around for me when there was this issue with my son, health issue. He was the first one to call me and stand by me and stand by our family. And I didn't know him very well back then. So, आपके अच्छे वक्त में तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन अपने बुरे वक्त में जो फरिश्ते आते हैं, I think that's Akshay. So that was the icing on the cake for me. I remember Karan had narrated the script on the phone, gave me a brief synopsis, said that there's this story of a super fan and a superstar, and I was sold on that. और जब राज ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, I just felt that the dynamic between these two actors, these two characters in the film is so unique, so refreshing, and it's a film that's the equation is this. It's dramatic, it's entertaining, it's very funny at times, and I had an absolute ball shooting with him. Shooting with him for a film is like, it's just like you're on a holiday. He's so funny in films, but he's funnier in real life. It's a joke a minute always. So it was such a delight working with him. Hi, Sohail here. Ladies and gentlemen, we're going to take two last questions. This is Sohail over here, from Ancient Bollywood. Akshay ji, Emraan ji, and the entire team, congratulations, everyone, the trailer is amazing. Akshay ji और all the 4 stars, Prithvi ji, आप भी, ऐसा कोई bad मोमेंट हो सेल्फी फैन के साथ? कभी कभी बहुत बार ऐसे तो हमने देखा है कि आपके शूज़ पे वाइट शूज़ पहने और पैर रख दिए, या कभी किसी इस तरह का कोई मोमेंट हो एक्चुअली जहाँ पर आप लोग तो कुछ शेयर करना चाहोगे? कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और पैर रख भी दिया तो क्या हुआ, उनका हक है। कभी कभी होता है भीड़ भाड़ में पैर रखते, जानबूझ के थोड़ी कोई रख रहा है। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी भी कोई फैंस के साथ कोई ऐसा मोमेंट हुआ है जो मुझे ऐसा रहे कि बहुत ख़राब रहा है। बहुत बढ़िया है, थोड़ी धक्का मुक्की होती रहती है, लेकिन वो तो बनता ही है उनका। Imran, this is Ravi from Yeah, 1 minute. Imran, Nusrat and everyone. Yeah. I mean, इसमें तो दो कोई राय नहीं है कि आज जो कुछ भी है हम अपने फैंस की वजह से हैं, and it's just उनका प्यार है, उनकी एक्साइटमेंट है जब वो आके आपसे मिलते हैं. I think actors have to understand that and enjoy that. I don't know of any actor who doesn't enjoy that. So for me at least, the frenzier it gets, the more excited and happy I get, क्योंकि वो अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. हम आज जो कुछ भी हैं उनकी वजह से. Yeah, especially the girls. In fact, like when they come to take selfie, like sometimes they try to get very close, तो कभी-कभी ऐसा कोई moment आप Not, I mean, yeah, sometimes, but I mean, it's always manageable, and I think that, like Emraan said, it's more, the fact that they want to come and take selfies with you. It's exciting, it's sweet, it's really humbling, and I think that's for me what I take away from it. But yes, it can sometimes, when there's a lot of people and a lot of crowds, it can sometimes get a little uncomfortable. But it's all in the excitement of it, and it's good intentions. So. मेरा तो इंसिडेंट मैंने आई थिंक बताया भी था बहुत पहले. किसी ने हाथ रख दिया था, बट आई टेल यू ये होता क्यों है, क्योंकि आप इतने फ्रेंजी में होते हो. अभी हम जब बाहर आए थे स्टेज पे, देयर वर सो मेनी पीपल हु वांटेड अ पिक्चर विद अक्षय सर. उस भागम दौड़ी में ना 1 सेकंड मिलता है आपको, एंड यू फील लाइक 1 सेकंड में बस पास चले जाए. मतलब कैमरा बड़ा है, हम सब फिट हो सकते हैं फ्रेम में, बट वो उस वक्त नहीं सोचता है. सो उसमें कभी कभार चीज़ हो जाती है, बट आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ द फैक्ट दैट वी नो वाई दे वांट इट. हमें पता है उनका प्यार है, हमें पता है कि इसके लिए ही वो यहाँ आए हैं, और क्योंकि वो वहाँ आए हैं हम यहाँ हैं. तो एक पॉइंट के बाद आई डोंट थिंक हम में से कोई भी स्टार्स ऐसे इतना परेशान होता है या सोचता है कि ये क्यों हो रहा है.
I think that's the point of the film. We humanize it. तो अगर हम अपने fans को humanize नहीं करेंगे तो हम humanize कैसे हो सकते हैं? So. Hi Akshay sir. We have one last question. Hi, Karan Akshay sir, this is Karan Ankita sir. From Ji. Peeping Moon. Sir. Karan. हाँ जी. Yeah, Karan. Yeah, can I? Carlo. Yeah. I just want you to share, what is the role played by Dinah and Nusrat in this in terms, because they were just referred to as 4 heroes, there was a reference. So could you just... Dinah is playing my wife. Nusrat is playing his wife. They are, both, I think Nusrat and Dinah are very pivotal to the narrative and how it moves forward. Their contribution to the film has been immense. And when you do see the film, you'll know exactly how and why they have been cast in their respective roles. Hi Akshay sir. Hi. Sir, this is Ankita from Peeping Moon. I have a question for you. Sir, the PM recently requested party workers to not unnecessarily comment or criticize the films being made. Has the industry started breathing more freely now? Well, see, positivity is always welcome. Ma'am. छोड़ दो, let her talk to me. So positivity is always welcome, ma'am. And if our Prime Minister is saying something like this, I think he's India's biggest influencer. If he's saying something, and if things change, it'll be great for the industry. And why not? It should change. Things should change. Because we go through so much. हम फिल्में बनाते हैं, फिल्में को सेंसर बोर्ड में ले जाते हैं, वहाँ से पास करवा के सब कुछ ले जाके फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देता है, फिर गड़बड़ हो जाती है सब कुछ. लेकिन Abhi, I think because he said it, so I think things will work out for us, benefit of us only. Thank you. On that last note, ladies and gentlemen, we're taking no more questions. I'd like to thank the entire cast, the crew, our producers, our illustrious members on the stage for being here today, for celebrating the launch of our theatrical trailer of our film Selfiee that releases February 24th, 2023. And we'd require, the photo op is waiting for you. हाँ जी, क्या करूं? मैं चले जाऊं? क्या करूं? अच्छा, पोस्टर हटा दो. क्या हटा दो? खुद को. अच्छा, चेयर हटा दो. Can we have the chairs removed, please? आ जाइए. जी सर. अरे अक्षय कुछ बोल रहा है भाई. ये बढ़ रहा है. चाहता हूँ कि बात जरा सुन लीजिए. ये जो हमारी फिल्म सेल्फी है ना, ये हमने बड़े प्यार से बनाई हुई है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग हैं, अगर आपके पास कोई फोटो है जो आपने अपने कोई भी सेलिब्रिटी के साथ फोटो खींची हो, उसे आप अपलोड करिए और हैशटैग सेल्फी में सेल्फी है या सेल्फी पे सेल्फी है. हाँ, सेल्फी पे सेल्फी, हैशटैग सेल्फी पे सेल्फी. तो आपकी फोटो जो है वो हम स्क्रीन पे, आप बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म, वो हम फिल्म के अंदर डालेंगे. मैं डालता हूँ सलमान भाई वाला ही फोटो डालता हूँ. सलमान भाई वाला ही डालता हूँ फोटो. अरे माँ.
उधर ऊपर पहुंच यार माँ अरे श्री क्या कर रहा है श्री किधर है आया ना उधर नीचे खड़ा है सर थोड़ा ऊपर आ जाओ हमारे साथ अरे नहीं भाई इधर मत बुला पागल है क्या तू ये चॉकलेट कितना फोन आएगा भाई बैंक का और स्कैम का कितना फोन आएगा ऊपर ले रहा है क्या उसको अरे ले तो बाजू में ही घूमने लगी अरे छोड़ी नहीं रही भाई ये पटेल नीचे ले पटेल डायना पेंटी फोटो नहीं दे रही भाई क्या बोलने का बता हाँ अरे खींचा उसको और पुलिस वाले को बुलाया देगा पाजी ये मैडम बस है मैडम वो मैडम निकल गया चल पाजी